وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we will be studying two surahs today, Surah Infitar and Surah Mutaffifin. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help us understand these surahs in the right perspective and to help us derive the best messages out of this surah. And may Allah subhanahu wa ta'ala make these sessions most productive and beneficial to each one of us. I'm sure you would have gone through the translation of these surahs as well. But at the same time, I wish you to be attentive in the class and look forward to your 40 minutes undivided attention when we will inshallah be studying these surahs. Make sure that you keep only the mushaf in front of you, not the translation books or the Quran or the cell phone rather, and sit in places where there's least disturbance. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to take the maximum benefit of these sessions. Ameen ya Rabbal Alameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بُصِرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بُصِرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, when the skies will be cleft asunder and when the stars will scatter and when the oceans will swell and when the graves will be turned upside down or toppled, will know every soul what it sent forth and what it left behind. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान खूब रहम फरमाने वाला। जब आसमान फट जाएगा और तारे बिखर जाएंगे और समंदर उबल पड़ेंगे और खबरें जो है उलट दिए जाएंगे या उखाड़ दिए जाएंगे, जान लेगा हर इंसान जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा. What are the good deeds they have sent forth for the tomorrow and what are the opportunities they got but they left it. जो कुछ नेकियां उन्होंने किए आने वाली जिंदगी यानी क़यामत की जिंदगी के लिए और जो कुछ मौके उनको दिए गए नेकियां कमाने के, लेकिन उन्होंने उसे हाथ से छोड़ दिया. तमाम चीज़ों को जो है इंसान उसको जो है ये खबर दे दी जाएगी, वो जान लेगा. जिसने अपने सामने वो नेकियां देखेगा तो उसको जो है ये महसूस होगा काश मैं और भी नेकियां करता तो कितना अच्छा होता. और जिसने मौके उसको दुनिया में दिए गए थे नेकियां कमाने के लिए, लेकिन हाथ से छोड़ दिया तो वो पछताएगा. The person will be, on seeing his good deeds, will only then think, if only I had done more good deeds, how nice it would have. For example, you come to the Quran class, yeah, an opportunity to do a lot of good deeds, to derive a lot of rewards from Allah. So you would have only felt that if only I had taken it even more seriously or attached and strengthened my relation with the Quran even more and should not have left a single class and connected myself to the book of Allah even better. But those people given an opportunity to study the book of Allah, for example, which I gave, or to gain guidance through the Quran, would only regret for having missed an opportunity. Allah subhanahu wa ta'ala says everything will be made known to man on that day. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O man, what deceived you about your Lord most noble? The one who created you, then fashioned you, then put you in perfect proportion. In whichever form he wished, rakkabak, he put you together. ए इंसान, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला रब्बे करीम के बारे में? वो जात जिसने तुझे
पैदा किया, फिर दुरुस्त किया, फिर तुझे सही तनासुब में बनाया, फिर जिस सूरत में चाहे वो तुझे जोड़ दिया. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला says, what deceived you? Who deceived you? What deceived you? किस चीज ने तुझे धोखे में डाला? कौन तुझे धोखे में डाला? You thought this wealth, this authority, this intelligence, these relatives and friends and family members, these contacts will always be there to help you. And you took undue advantage of it and did a lot of evil deeds, think that you will get away. तूने ये समझ रखा था कि ये दौलत, जो इख्तिदार, तेरे कॉन्टैक्ट्स, तेरी होशियारी, तेरी अक्लमंदी, इसके बिना पर तूने जो नाजायज फायदा उठाकर गुनाह का काम करते रहा, समझता रहा कि ये चीजें तुझे परेशानियों मुसीबतों से निकाल देगी, तो धोखे में रह गया. आज है क्या कोई? इज देयर एनीवन टुडे टू हेल्प यू? In this world itself, nobody comes to your rescue at critical situations. Where is the question of you being protected or anyone coming to help you on the day of Qiyamah? दुनिया में इच नफ्सा नफ्सी का आलम, कोई किसी का काम नहीं आता. तुम किए ना गलती, भुगतो, कोई काम नहीं आएगा. आखिरत तो दूर की बात. You knew very well the shaitan is there to deceive you, right? This was told to you right in the beginning. Why did you give space to shaitan? वे खुल्लम खुल्ला तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डरा दिया ना. ये शैतान जो है तुम्हें सीधे रास्ते से हटा देगा, गुमराह कर देगा, बुराइयों की तरफ ले जाएगा. पता था ना तुम्हें. शैतान को तुमने मौका दिया, उसके फंदे में आ गए. So Allah subhanahu wa ta'ala is asking a very powerful question. In other words, Allah is saying, be alert, be careful. This is a temporal world, attractive world, be careful. दुनिया जो है बड़ी रौनक, बारौनक बना दी गई है, संभल के रहो. इसके पीछे पड़ोगे और बुराइयों में मुब्तला हो जाओगे, दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी. You'll be after this worldly world, worldly life and its attractions. You'll be at a loss both in this world and the hereafter. Be careful, Allah says. Only the halal of this world is allowed, not the haram. Kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nay, but you deny in the day of recompense. And verily upon you surely are guardian angels. Guardian means guardian angels. Kiraman katibin, honorable scribes. They know whatever you do. हरगिज नहीं, बल्कि तुम तो झुटलाते थे जज़ा और सजा के दिन को, और बेशक तुम पर जरूर निगरान थे, यानी निगहदाश्त फरिश्ते थे. किरामन कातिबीन, बड़े मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो. So Allah subhanahu wa Whatever ta'ala you says the main reason for you to get beguiled is because you didn't have strong faith in the hereafter. You thought that you can go scot free. That Allah subhanahu wa ta'ala will not call you to accountability on the day of Qiyamah. तुम यही धोखे में रहे कि जो कुछ मैं करूं कुछ होने वाला नहीं, क़यामत के बारे में बाद में देख लिया जाएगा. और तुम्हें कभी ये खौफ नहीं था कि अल्लाह के सामने एक दिन मुंह दिखाना होगा. So you did a lot of evil deeds and you thought nobody has seen you when they were guardian angels on either side of yours to note down everything that you have been doing. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. They know everything whatever you do. Nothing is gone unrecorded. हर चीज दर्ज किया गया. नेकियां किए तो नेकी सिर्फ दर्ज नहीं की, बल्कि नेकी के पीछे क्या नियत थी वो भी नोट किया गया. गुनाह किए तो किस बिना पर गुनाह किया गया, किस जुर्रत के साथ गुनाह किया गया.
You've done good deeds, then what is the intention also behind those good deeds are also noted down. If you've done an evil deed, with what audacity you have committed that evil deed is also noted down. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wama hum anha bighaibin. Verily the righteous surely will be in bliss or in delights, and verily the wicked surely will be in the blazing fire. They shall burn in it on the day of recompense, and not they from it will be absent. बेशक नेकोकार नियामतों में होंगे, फुज्जार यानी बदकार बढ़ती हुई आग में होंगे, वो जलेंगे उसमें जजा और सजा के दिन, वो जलेंगे जजा और सजा के दिन में उसमें, और नहीं होंगे वो उससे गायब. Nobody will be absent there. Everybody will be presented before Allah, and Allah's verdict will be pronounced. Allah will pronounce His verdict, and that will decide whether they are going into the Naim or the Jahim. Allah protect all of us and admit us in the Naim, in the gardens of bliss. Ameen. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Yeah, at the end of the day, we commit mistakes only when the yaqeen and the firm faith in the hereafter gets overshadowed. गुनाह इसलिए करते हैं अक्सर और बेशतर कि क़यामत पर जो है वो यकीनी कैफियत नहीं होती. ठीक है, देख लिया जाएगा, we'll see that, it's okay, it's all right. This type of an attitude is very dangerous. Allah is saying, do you know what is and what makes you know what is the day of recompense? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानकारी है? क्या तुम इदराक किए हैं? क्या तुम जानते हो कि वो कैसे खतरनाक दिन है वो? Allah subhanahu wa ta'ala is again repeating, see, summa ma adraka ma yawmuddin. Then what makes you know what is the day of recompense? दो दो बार अल्लाह दोहराता है. पहले बार पूछता है ma adraka ma yawmuddin. What makes you know what is the day of? Do you know the trauma, the horrible situation, and the kind of conditions you will be in? And you're taking it so lightly? Do you ever know what it is? दोबारा अल्लाह पूछता है, दो दो बार तकरार होती है अल्लाह की बात में गुफ्तगू. पहले बार पूछते हैं अल्लाह, क्या तुम जानते हो क्या है ये जजा और सजा का दिन? ऐसा नहीं है जैसे तुम समझते हो. तुम समझते हो कुछ भी होने वाला नहीं, सब ठीक ठाक है, और फिर तुम जो है कलमा गो है तो तुम्हें जन्नत है. ऑल दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इसलिए अल्लाह फिर पूछता है, पता है तुम्हें क्या है ये जजा और सजा का दिन? Then the final point which Allah is making is very very powerful. यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह. जिस दिन नहीं काम आ सकेगा कोई इंसान किसी इंसान के लिए कुछ भी, और तमाम इख्तियारात और फैसले उस दिन अल्लाह ही के इख्तियार में होंगे. तमाम फैसले उस दिन अल्लाह ही के इख्तियार में. Not will avail a soul for a soul anything. Nobody will come to your rescue. Nobody will come to your rescue. And the decision on that day will be for Allah alone.